Okay. Okay. So all of you know there are four modules: writing, reading, listening, and speaking. Okay, so let's first cover the main part, the writing part, where you put in the most work, I feel. So, writing, I don't know how many of you know, but there are six essay types. If you have 1 month, I would want you to cover two essay types in every week. That should your goal. That should be your goal. So in 3 weeks, you're going to cover all the six essay types. So for example, agree, disagree, discuss, you can cover in 1 week. The next week, direct and advantage, disadvantage. The next week, positive, negative development, and problem solution. How can you cover them? I'll also tell you how you can cover them if you haven't. So if you come to our websites, I'll also directly share the material, but I'll tell you where you can go directly. So if you can see this, you can go to our website, Marker IELTS. There are all, you come to this writing part, academic writing. Even for GT, you come to this part. So there, all the essay formats are shared here. You just need to click here and the essay type will open. If you feel it's too boring, you don't want to read it, no problem. You can watch a video on YouTube. So basically, these are 15-minute videos. You need to go over this pattern once. So for every essay type, so two essay types in a week, that would be your goal. All the essay types are shared here, except discuss, direct essays. That I'll cover with you. If you after you've done all of these, I can cover that with you. So that is how you can start on your own. And these are very good videos. You just watch them once, and they'll bring you so much clarity. You'll get a lot of clarity. I just have one request. If you go with the video route, please keep a pen and paper with you so that you can make notes. Make certain notes so that you're clear with the patterns. If you have any doubts, I'm there to discuss the doubts with you. You can ask them doubts according to them. We can keep 1 week in a week just for doubts. I can cover your format doubts if you have any doubts. So I'm thinking this week I'll have 1 day just for doubts and formats, and 1 day just for doubts. Like if you have a random graph you want me to cover, we can have one day like that in the week, or a graph or an essay. I can cover anything. So 2 days we can keep for just for doubts, and 3 days for readings. That's fine. But that would be my method of preparing for the essays. So you just go to resources, academic writing, and here just watch this video one by one, two videos per week, 15-minute videos, very short, give you a lot of clarity. So that would be your first step. Attend, like do that for writing. Then, if you're the next thing I would do is try to write at least three of each type. So you have 6 days in a week, apart from Sunday. So just attending the pattern does not work. You have to write three of each type. So at least get to attempt three of agree, disagree, three of discuss. Just write them. If you don't practice that much, I think it's too less. And I'm not asking you to write a lot of essays. Total essays I'm asking you to write is 6 into 3, 18. That's all. I'm asking you to write just 18 essays. It's not a lot. So that would be your next goal. And the third part to cover the essay types would be to read. And I would say read at least 25 essays in a week. So basically, I would want Monday to Friday, if you're giving it, read at least five. Out of those five, you can write one. So that should be how the preparation phase for the essays should begin. Like that is how you make a goal. I know a lot of you are busy. That is why you're attending the classes online. You don't have time to like go to a coaching center or attend classes. So this is how you can divide it. It will not take you a lot of time. Writing one essay is about 1 hour. Let's imagine that 1 hour. Reading five essays is another half an hour. So basically 1.5 hours is this part. And attending the pattern that you're going to attend only 2 days in a week. So that is only like, half an hour in the whole week that you can do on Sunday. Like you can do it on the Sunday for the next week. So, anyone has any doubts how to cover the writing part? This would be my like study plan for the essays. Anyone has any queries here? If you feel like anything else you want to ask, like where to write the essays from,
I'll also cover that at the end of the class, like where to take the essays, where to read them. I'll cover that at the end. But any other doubts? The patterns I told you available on the website. You can read there or you can watch the videos. They're available free. You don't have to pay anything. So no problems there. Anyone can do it, like watch them and learn there. Okay. Any questions? Is this clear? Like the plan is clear here? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Is the plan okay for essays? Yes, sir. Okay. Now let's come to graphs. Graphs have the same plan, exactly the same plan. There are 6 graphs. You cover 2 every week if you have 1 month. If you have 2 months, you cover 1 in each week. If you have 1 month, I would say cover every graph in every week. So cover 2 graphs every week. The last week is going to be for practice. So you're going to be taking a lot of like practicing them every day. So treat it like you're going to be writing each graph every day for in the last week. But otherwise it's the same plan. 6 essay types, 6 graphs. And for GT students, there are just 3 letter types. So you can do 1 letter in each week. So the first week you can cover the formal letter, the second week the semi-formal, and the third one informal. So your work is a little bit less. So for academic, I would do that. The material is the same location. You go to the website, you come here, and all the graphs, if you can see here, all the graphs are shared here. So you just have to attend one by one all of them. So that's it. So 2 per week, attend the patterns, you learn the pattern, how to attempt them, and that's it. Write at least like 3 of each type. That should be a goal. Again, I'm not asking you to write a lot of graphs. I'm only asking you to write 18 graphs. That much you have to do. So I would say that. And if you can, try to go through some other graphs. Try to see if you can attempt them. So again, the material I'll tell you, but the pattern links, YouTube video links I told you where they are. If you prefer YouTube, go watch the video. If you prefer the written part, it's again available on the website. You can just go and read there. No problems, whatever you prefer. So for the writing part, I would do that. I would be writing 6 essays and 6 graphs every week. That takes up a lot of time. You have to find time for that somehow. So if you have a plan of taking the exam on in one month, you have to write that much. So try to give it that much time. 1 essay and 1 graph you have to write for the writing part. इतना करना पड़ेगा मतलब I would expect you to devote at least 4 hours of study. So 4 hours का study plan है. Even if you're working, you need to find 4 hours. उससे कम में it's difficult if you want to cover in 1 month, I would say. Okay, any other questions? And if you have doubts, I'm there. We'll have one day in a week, like we said, we can discuss the graphs or the S's, whatever you want. That can be a goal. Okay, now let's come to the second part, speaking. So the book, I would say you can avoid doing the speaking part for 1 week because the book for the new cue cards will come out by 8th. I think it will have 50 cue cards. And I would say you can cover 2 cue cards in a day. So 25 days you can give to that. If you are in a hurry, you plan to give by January end, you can start with the book. You can cover the first 20 cue cards. They will be asked. So for now, the first 20 to 25 cue cards you can do for the next 7 days, and the rest when the new book comes. Your goal should be just 2 every day. So in 25 days, you can finish the syllabus up. 25 into 2 is 50. That's all that you need to prepare. 50 cue cards with follow-ups. So give it about 1 hour, like prepare. For this, I will say have a teacher. If you're not enrolled, do enroll for this, I would say, because speaking practice only happens with the teacher, I would say. Otherwise, you take it a little bit lightly and there's no one to tell you your mistakes. So I will say just have that practice set and have that. Teachers can also help you only if you prepare. So go prepare, have 2 cue cards prepare. And by preparation, I don't mean you have to remember every line. What I mean by preparation is have an idea of what you're going to talk about. Have an idea about the idea. Like, there's a topic.
have it in your head that you're going to talk about it. Sometimes you have ideas which are impractical or completely wrong. Try that with your teacher. You have a teacher, you can ask them to listen. You can go into the class prepared, and you can say, okay, give you can ask me these two cue cards and give an idea. Otherwise, you can prepare 10, and you can ask your teacher out of the 10, you can randomly ask. So you can go about it like that. So I would prepare it like that, two cue cards in a day with follow up sets and along with just two intro sets. Prepare it like that, divide it into a syllabus, and that way you can finish it. Okay. Reading, I would say practice at least one passage every day. One passage, not the whole reading. I'm just saying one passage. And on 3 days in a week, completely solve the whole reading. So 3 days whole reading. Rest of the days you can have like you can do just one passage. That's enough. 3 days complete reading. That should be your goal. The other part is when you solve the complete reading, you have to discuss your doubts. So please discuss your doubts. Look at your doubts. If you have made mistakes, you need to spend time on that. So the task is not just to solve readings. You have to spend time on clarifying your doubts. Only if you spend that time, you will not repeat the mistake. I'll be honest with you. There are so many students of mine who solve so many readings, but they come to me after 2 months and they have no improvement. And I'll tell you the reason, because they don't like solving a new reading is very interesting. But working on your mistakes, why you made the mistake in the previous reading, what was the wrong part, what did you not know, why did you do it wrong, that is much more important. That brings about improvement. So work on your mistakes. Every question that you get wrong should make you learn something. Agar if it's not making you learn something, then there's no point of solving the reading. Then you're just going to take another reading in the exam. Nothing happened. Even the right questions to teach you something should teach you something. Okay, listening, I would just say solve about for you, I'll just say solve about 10 to 15 before the exam in 1 month. That's it, enough. It doesn't require much more training. If you're having problems, um, practice, ear training. So listen more. Try to understand what they're saying if you're getting a lot of them wrong. And for spellings, I'm planning to share some dictations with you. So every day, one of my teachers will share just spellings with you. Like, how will it be? Like, ma'am will say out like 15 to 20 words. You have to write the spellings. And then ma'am will also speak out the correct spellings after saying the 20 words, and you can check it. So you don't need anyone's help, and it's going to be shared with everyone, not paid, it's free. So again, you can do that, everyone. I'll share it in the group with all of you. Okay. Um, and then the books, I recommend only three books. One is for reading, one is for graphs, and one is for essays. I think you should buy at least three books. I think you should buy just three books. One for reading, one for graphs, and one the essay. Essay book is really important so you can cover ideas. The graphs are also really important so that you can try essays, you can write them, and you can write the graphs and send it for checking. And reading, buy just one volume. If you finish it, you can buy one more. Just get one book. And I think volume one, volume two, and volume three are great resources because they're exam readings. I don't know if you know, on the exam on which date? 28th. One of the readings was from volume 3, one of the passages in the reading, making copier. If you don't know, we can cover that also today, later on. So just cover that. That's it. Nothing else. One volume. So you have a reading resource material. If you don't know how to get the material, see, it depends. If you prefer like, books, paper books, again, you can buy them from the website. Just three books, I would say. They will not cost you more than $1,000 with courier. I think get that much. We spend so much on other things. I would do that if I was you. One essay book, one reading book. Your choice. All are equally important, and one graph book. For general, just two books, one for writing and one for essays.
That's it. So two books for general because the letters and essays are in the same book, and one for reading. That's it. Two books and one for that. The speaking book, if you're a student enrolled, we'll share it because it's going to be a PDF. It's going to be shared free with everyone. Not a problem. Listenings also, ma'am will share free with you. If you're enrolled, not a problem. And even some readings, if you don't want to buy readings, we can share. But the essay book and the graph book, I would suggest you have it because it's good to practice and good to read some essays and graphs, like good to read some essays and look over graphs. So otherwise, I don't want you to spend money elsewhere other ways. So this is how you can prepare. Um, I would just say that. So that should be your preparation goal. That's how I would prepare it. And you can do it in 1 month easily, not very difficult. Okay. So I spoke and never stopped to ask you doubts. So any doubts? Anything you want to ask now about your preparation? सर टास्क वन Sir, का आंसर किसको भेजेंगे? Task one you can send to me or you can send to ma'am. Okay. If you're writing, see, um, पता क्या है? If you want to do with me, then be regular. If you have if you want to send to ma'am, send it to ma'am. Do be regular. Just be regular and send. You can send the task one to me, task two to ma'am. That's fine. Be regular, like have that as a goal now. Just 1 month, right? 3 bars लिखने हैं, three tables लिखने हैं, बस इतना ही करना है. 3 bars and move on. And ऐसे नहीं तीनों लिख के इकट्ठे नहीं भेजने. You send one, I tell you your mistakes. Next बार में वो mistakes नहीं करनी है. सो ये थ्री जो है ना, ये थ्री मेरा एक गोल्डन प्रिंसिपल है. पहले वाले में काफ़ी गलतियाँ होती हैं. सेकेंड वन योर मिस्टेक्स रिड्यूस, एंड बाय द थर्ड टाइम यू राइट अ लॉट बेटर. सो इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर फीडबैक एंड यू डोंट इम्प्रूव, तो वो मिस्टेक्स होती रहेंगी. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स इन एवरी को. कट्ठे भेजने का कोई सेंस नहीं है. राइट वन बाय वन, send one on Monday, the next one on Tuesday, next one on Wednesday, one by one, and you improve and you go further that way. The task one can be sent to me for academic. For GT, it should be sent to ma'am. I don't check letters. And the task two, I think you should be sending it to ma'am. So okay. Any other Yusuf? Any other doubts? नो नो No. नो सर. Okay. Somebody else has a doubt? सर ये टास्क वन का जैसे एक दिन बार का लिखना है फिर एक दिन टेबल. नहीं नहीं, एक दिन बार नहीं, पहले 3 दिन बार हफ्ते में, फिर नेक्स्ट 3 days टेबल. इफ यू वांट टू कवर इन वन वर्क, तो पहले 3 बार खत्म करते हैं. मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कैन बी द बार डे. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कैन बी योर table day. ओके. Okay, so like that, finish off bar, then finish off table. You're done with 2 graphs in a week. Good enough. Let's move on to the next week. sir, I have Yes. problem in reading. I just get 6.5 on 7, but not more than that. But I need more than More 7. I in reading. I practice, but I practice, but I didn't get good number. What should I do? Okay. Do you so you have you wondered why you're making mistakes? Where are you making mistakes? Like what part are you getting? Is it time management? Are you not able to, are you able to solve the 40 questions in time? Uh, most of the time, yes, but sometimes it Most happens. of I the time can't you're manage. you're able to solve. Okay. Um, But okay. I have problem in MCQ. Too much I make mistake. Okay. Also, I think sometimes uh, uh, writer. Yeah. Okay. So okay, do one thing, Nuria. So solve a reading today or tomorrow, or whenever you want to, and you note down your mistakes now, and you bring it here, and we'll discuss it here. Any reading that you did. Let me try to understand why you're getting them wrong. Let's figure out why you're making the mistakes. Are they silly mistakes? Is something wrong? Are you not focusing on the right thing? Let's focus, okay? At least two to three mistakes is fine, but if you're making more than that, then let's wonder if you're making one question type wrong again and again. Let's you have to discuss your doubts. Like I said, in reading, I think it's really important to discuss your doubts because if you don't discuss, you will not learn and you'll keep on making the mistakes.
So discuss your doubts. I got this wrong. Why did I get it wrong? I want to get it correct. Have that approach, and that way you'll improve. Okay, teacher. Okay. 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 Yes. You can Hello, bring sir. it, Good evening, sir. Krishna. Yes. Yes, Krishna. Sir, as of now, actually, since last 1 week, I have been listening these classes, but still, I didn't get the proper idea on this IELTS academic. Okay. So I don't know if uh, I so I don't have plan to write within 2 or 3 months. So Okay. can you suggest me because as per my knowledge, if I go for exams within 2 months, I don't know I will get at least a five band. So I need a specific base on the this IS. So can you suggest me what is the plan I need to follow? So for you, if you have 2 months, right, just one essay type every week. So how you start about it, Krishna? You go to the Uh, website. Yeah. Okay. I, तो मैं ये I'll पूछना guide you. चाहता हूँ सर कि हाँ सर Yeah. Yeah. Sorry. बताइए सर। Repeat. 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 तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे प्लान करूं क्योंकि मेरे नॉलेज से मुझे लग रहा है कि मैं शायद स्पीकिंग अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो मैं क्या है कि जो अभी क्लासेस है मैं थोड़ा दूसरा एरिया में रहता हूँ वहाँ पर क्लास सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है मतलब ऑनलाइन नहीं सुन सकता हूँ। वो रिकॉर्डेड क्लास जो है वो सुन सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ऑफ ड्यूटी हूँ उसके लिए मैं क्लास सुन पा रहा हूँ। तो मुझे आप थोड़ा गाइडेंस कीजिए मैं कैसे प्रिपेयर हूँ तो मैं जल्दी इसको सक्सेस Okay. कर सकता हूँ। Okay. Krishna I'll guide you again. Okay. So see, Krishna, यहाँ पे ये 5 ऐसे टाइप्स हैं, ठीक है? द रिकॉर्डेड क्लास इज ऑलरेडी हियर। सो सबसे पहले ना क्या करना है, यू ऑल ऑफ यू, I just want you to listen to one, like these are 15 to 16 advantages. ये मैम के वीडियोस हैं, इट्स इन मैम्स वॉइस। सो दिस विल डिस्कस द होल फॉर्मेट ऑफ एन एसे। ऐसे 6 ऐसे टाइप हैं IELTS में। तो हमने हर एक हफ्ते ना, फॉर यू इफ यू हैव 2 months, आई वुड से एवरी वीक यू हैव टू कवर जस्ट वन ऐसे टाइप, मतलब उसका फॉर्मेट सीखना है कि वो कैसे लिखते हैं, ठीक है? That you should do at the beginning of the week. So for example, on Monday or Tuesday, that should be your goal कि मैंने ऐसे फॉर्मेट सीख लेना है, ये वीडियो अटेंड करना है। It will not take you a lot of time, 15 minutes, but जब ये साथ में सुनना ना, इसके साथ में नोट्स भी लेने हैं। मतलब यू हैव टू नोट डाउन कि ऐसे लिखना है, मतलब यू हैव टू नोट डाउन, वो अच्छे से मैम बताएंगे, यू कैन नोट इट डाउन। और अगर वो टू फास्ट जा रहे हैं, यहाँ पे सारा लिखा भी हुआ है साथ में, सो यू कैन रीड दैट। एंड अगर वो रीडिंग में प्रॉब्लम है, मेरे को बता देना, आई शेयर अ पीडीएफ विद यू आल्सो कि कैसे करना है। यू कैन डू दैट, इट्स द सेम थिंग रिटन इन अ पीडीएफ, नथिंग नथिंग डिफरेंट। सो यू लर्न हाउ टू राइट द ऐसे, मतलब ये ऐसे टाइप ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे करके यू कैन लर्न ऑल द ऐसे टाइप्स। सो सारे के सारे एक एक हफ्ते होते जाएंगे। देन व्हाट डू यू डू? आफ्टर यू हैव लर्न द फॉर्मेट, यू आर गोइंग टू रीड 5 essays, कोई भी 5 बुक्स में से कोई भी 5 उठाने उसी टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई टेल यू द essay टाइप्स रियली क्विकली। जैसे एक ऐसे टाइप होता है डिस्कस ऐसे, ठीक है? सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, और अदर लोग कुछ और कहते हैं। नाउ व्हेन यू रीड द वीडियो, वो आराम से क्लियर हो जाएगा डिस्कस ऐसे क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज यू गो टू द बुक, एंड बुक में जाके ना 5 ऐसे पढ़ने, दिन के पढ़ने। फॉर दैट होल वीक यूल बी रीडिंग 5 essays, सो 25 essays यूल बी रीडिंग। एंड उनमें से ना एक बार पढ़ लिए पांचों, एक लिख देना है। बस यू राइट वन एंड देन यू सेंड इट टू मैम फॉर चेकिंग। एंड जो भी मैम ने गलतियां बताई ना, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दोस मिस्टेक्स, एंड अगले दिन जो ऐसे लिखना है उनमें वो गलतियां नहीं करनी है। अगर नाउ यू हैव मोर टाइम, you if you don't find, अगर you are working also and you want to give, like you have more time, I would say 2 दिन में भी एक ऐसे लिख लिया बहुत है। So just write 3 essays in a week, that's fine। मतलब आराम से, but look at your mistakes। जब next time ऐसे लिखना है वो गलती ना हो। 2 दिन में एक ऐसे लिख के मैम को you should be sending, so that should be your goal। So this is how I would do it, जो task 2 है। So you have 2 tasks in your IELTS। एक होता है task 1, एक होता है task 2। task 2 जो होता है उसके अंदर ऐसे लिखना होता है, तो ये मैं ऐसे का बता रहा हूँ। ओके, सो
नाउ सिमिलरली टास्क 1 होता है, वो भी यहीं पे अवेलेबल है, वो भी मैं यही बोलूंगा हफ्ते का एक करना है, एंड यू कैन राइट वन, एंड मतलब हफ्ते में 3 लिख देने, जैसे 1 डे यू कैन प्रिपेयर, 1 वीक यू कैन प्रिपेयर बार, एंड वो अच्छे से पैटर्न मैम ने अच्छे से क्लैरिफाई करा हुआ है कि अब ये कैसे लिखना है, जो बार ग्राफ है कैसे लिखना है, मतलब इंट्रोडक्शन से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड इन वेरी शॉर्ट लाइक 10 सेंटेंसेस में पूरा ग्राफ, सो यू लर्न हाउ टू राइट इट। फिर यू जस्ट अटेम्प्ट लाइक 2 दिन में एक लिख के मैम को चेकिंग के लिए यू शुड बी सेंडिंग, एंड मैम विल गिव यू द फीडबैक, एंड अगेन वही करना है कि दोबारा वो गलतियां नहीं करनी जो एक बार लिखा है, यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द मिस्टेक्स अगेन, सो दैट शुड बी योर गोल। इट्स नॉट अ लॉट टू डू, यू नो, यू आर गोइंग टू बी, पहले तो 15 to 40 minutes you're going to be spending on the format कि कैसे करना है। Once you have learned the format, you're just going to be, writing them and sending them to ma'am and reading daily. जो task 2 है, जो essays हैं, वो तो मैं बोलूँगा थोड़े पढ़ने भी चाहिए, because idea generation is very important in essays. So task 2 में नहीं इतना, task 1 में इतना नहीं बोलता हूँ, ग्राफ में मैं इतना नहीं बोलता हूँ, पर task 2 में मैं ज़रूर बोलता हूँ you should read. That's it. राइटिंग में और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 टास्क हैं, मतलब यू प्रिपेयर वन, हर एक मतलब टास्क 1 टास्क 2 दोनों को हफ्ते में, इफ यू प्रिपेयर वन टाइप बहुत है, लाइक यू कैन प्रिपेयर 6 वीक्स में वो प्रिपेयर हो जाएगा। द नेक्स्ट टाइम, द रिमेनिंग मंथ्स यू कैन, रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग वीक्स यू कैन जस्ट लाइक हैव अ रिविजन। तो मैं ऐसे करूँगा इसको प्रिपेयर। अगर वंस यू अटेंड द फॉर्मेट, अगर कोई फॉर्मेट नहीं समझ में आए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी और मैम एंड टेल मैम या मेरे को कि मेरे को दोबारा फॉर्मेट करा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, वी विल ऑल्सो कवर द फॉर्मेट अगेन इन द क्लास फॉर यू। तो दोबारा इन फ्रंट ऑफ यू लाइव वी कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। सो जस्ट आस्क मी कि ये वाला फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने में आई विल हैव नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। तो ये गोल रहना चाहिए राइटिंग पार्ट के लिए। राइटिंग पार्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट उसके थोड़े से फॉर्मेट्स हैं, जस्ट लर्न दोस फॉर्मेट्स एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड वो बहुत अच्छे बैंस आ जाते हैं। फॉर्मेट का ये मतलब नहीं है कि लाइनें रटा मारनी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। फॉर्मेट का अटेम्प्ट करने का वे क्या है, जैसे कुछ ऐसेज हैं उनको इस वे में अटेम्प्ट करते हैं, कुछ को डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करते हैं, कुछ में दोनों साइड्स बताते हैं, कुछ में सिर्फ वन साइड बताते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस है ना, वो क्लियर होते हैं जब तुम व्हेन यू लर्न द फॉर्मेट्स। तो वो फॉर्मेट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दैट वुड बी योर राइटिंग पार्ट। स्पीकिंग पार्ट, ma'am will give you a teacher, one-on-one teacher. So for you, your goal should be like, have you taken IELTS before? अ, अ, आप हाँ, मुझे पूछिए सर। आप IELTS पहले करा हुआ नहीं सर, है, स्पीकिंग का आइडिया है? मैं नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं वीडियो देखा था अच्छा लेकिन ठीक है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, उसके लिए मैं मैं। बताता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टेल यू स्पीकिंग में क्या होता है फॉर यू। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो आई विल गिव यू एन आइडिया। ओके, स्पीकिंग में ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक इज इंट्रोसेट्स, एक है क्यू कार्ड, और एक है फॉलोअप्स। सो लेट मी टेल यू ऑल द टाइप्स, इट विल टेक मी जस्ट 5 मिनट्स, मैं बता देता हूँ। ओके, या या सेम चना, एकेडमिक एंड जनरल के टास्क 2 में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज द सेम। Task 2. Task 1 is different. Okay. Task 1 भी मैं मैम को बोलूंगा. She'll upload the videos for the task 1 also. Just give me 1 second. I need to open. पर मेरे को पता नहीं चल रहा कैसे. Yeah. So for all of you who don't know what I mean by, now I'm coming to speaking part. Speaking part कैसे prepare करना है, speaking में होता क्या है, मैं अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा I'll be guiding all of you. So just give me 1 second. ठीक है, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं, एवरी 4 मंथ्स दे चेंज। अभी जो लास्ट थे ना, वो दिसंबर में आए थे, अभी नए आने वाले हैं, न्यू क्यू कार्ड्स आर गोइंग टू कम। तो दिसंबर वाले आ चुके हैं, द नेक्स्ट क्यू कार्ड्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, एवरी 4 मंथ्स दे चेंज। सो द लास्ट वंस फ्रॉम दिसंबर टू, अब जो नया मटेरियल आना है वो अभी बाय 8th विल बी रिलीजिंग। सो अभी मैं बोलूँगा स्पीकिंग में यू कैन थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन यू कैन लाइक रिलैक्स, वो 8th को आएगा तब तुम अच्छे से शुरू कर सकते हो, तब तक तुम्हें थोड़ा कम करना है, कर सकते हो। पर जिनका एग्जाम पास में,
उनको मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 20 पे ध्यान देना. Okay, so now I'll tell you what all is included in speaking. See, speaking में ना सबसे पहले क्या होता है कृष्णा? They ask you certain general questions on very easy topics. Like they'll ask you about topics like art. They'll ask you morning routine, कि आप morning में क्या करते हो? Sharing अच्छी बात है या नहीं? And they'll ask you very small questions. You have to answer in 1 or 2 sentences. ये first part होता है speaking का. So you go there. यू मीट द एग्जामिनर, वो आपका नाम पूछेगा और आपको कंफर्टेबल करने के लिए ना वो थोड़ा बहुत लाइक ही स्पेंड 3 to 4 minutes and he'll ask you very simple questions on very simple topics. So and you'll also know the topics. I'll give you the file. The file will have the topics. We know the topics also beforehand. And it's just a normal casual speaking, like you're just getting to know, the examiner is getting to know you, normal speaking. थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, कितने समय से आप काम कर रहे हो, आपकी हॉबीज क्या है, प्लांट्स के बारे में, आपके घर में प्लांट्स हैं या नहीं, कोई ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस नहीं है. फ्लावर, आपका फेवरेट फ्लावर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर. क्वेश्चंस वेरी सिंपल लाइक दैट. कभी आपने छोटे होते प्लांट्स उगाए थे कि नहीं उगाए थे, क्वेश्चंस लाइक दैट. टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, आप इंटरनेट कितना यूज़ करते हो, क्या आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हो, लाइक दैट. क्वेश्चंस लाइक दैट. कौन सी वेबसाइट्स यू यूज़ ऑन द इंटरनेट. वेरी सिंपल क्वेश्चंस लाइक दैट दे आस्क. दैट इज द टास्क जो पार्ट 1 होता है स्पीकिंग का. After you're done with this part, so here they'll do what? First, they'll ask your name, and then they'll ask you two to three questions on 2 to 3 topics. So they'll pick one topic like challenges, and they'll ask you 1 or 2 questions on this topic. Then they'll move up to another topic. They'll ask you 1 or 2 questions. Similar, मतलब they'll ask you 2 to 3 topics पे दो तीन questions पूछेंगे. Total 5 6 questions they ask in this part of the speaking. वेरी इजी क्वेश्चंस, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. बस वो जानना चाहते हैं आपके मतलब बारे में, आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, क्यों पसंद है. एंड तो दे विल जस्ट आस्क लाइक दिस. तो जस्ट प्रिपेयर दिस पार्ट, आई वुड से मतलब दिन में अगर हम 1 2 प्रिपेयर कर लें सेट्स, लाइक इंट्रो सेट्स 1 2 प्रिपेयर कर लें बाइक्स पे. I mean by preparing, you can just see the ideas here and then you can have your own idea. You can speak in front of a teacher. I'll say speaking, you can ask ma'am कि मेरे को एक one-on-one speaking का teacher चाहिए. She'll allot your teacher, she'll tell you the charges and she'll allot your teacher. And daily you can practice 20 to 25 minutes with that teacher. And इसके अंदर you can practice this. The next part of speaking, otherwise you can start reading on your own. When you have time, you can have that. For 1 month, I would just say that everyone should मतलब practice speaking. So after this, I would say जो second part होता है स्पीकिंग का, वो होता है फॉलो, इट्स अ क्यू कार्ड. क्यू कार्ड क्या होता है? यू हैव टू टॉक अबाउट अ टॉपिक फॉर 2 minutes एंड इसके अंदर यू आर गिवन 1 minute ऑफ प्रिपरेशन टाइम. सो दे गिव यू टॉपिक लाइक दिस. डिस्क्राइब अ मूवी यू वॉच रिसेंटली. दिस विल बी रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. यू विल बी गिवन दैट पीस ऑफ पेपर. तो आपके पास वो शीट आ जाएगी, आपको यू विल बी गिवन अ पेंसिल एज वेल एंड यू कैन टेक डाउन नोट्स. तो आप नोट्स लिख सकते हो. और फिर वो आपको यहाँ पे ये मतलब थोड़े बहुत यहाँ पे वो भी होंगे, क्यूज भी होंगे, लाइक व्हेन एंड वेयर यू वॉच्ड इट, जैसे इजी टॉपिक्स. या Penny? Okay. When and Yes, where sir. you any doubts? No? Okay, continue, sir. Okay. When and where you watched it? Continue. Okay. Who you watched it with? What was it about? Explain why you watched the movie. So they'll give you some cues. Your 1 minute of preparation time, but then you're going to speak for 2 minutes. Abna, speaking for 2 minutes, I'll be honest, it's difficult for me also sometimes. So I would say कि यहाँ पे ना, to have an idea, prepare that. So I would say once you start going, 1 per day. जब ये नई book आ जाएगी by 8th, I would just say start preparing on one topic. For example, if you get this cue card, describe a movie you watched recently. Think about it, मैंने कौन सी movie पे बोलना है. For example, if it was me, I would talk about maybe what is the latest movie I watched that I really had fun with, really enjoyed watching. Um, I would say I don't even remember मैंने अभी कौन सी देखी है जो मेरे को अच्छी लगी हो. I haven't seen any movie recently, but maybe Pushpa 2, I'll watch it in the coming days and I'll talk about that maybe. So उसके ऊपर क्या बोलना है, क्यों बोलना है, something like that you can talk about it. And कोई पुरानी मूवी भी बोल सकते हो. Then you can talk about you watched it on Hotstar or Netflix.
कुछ भी, पिक एनी मूवी, प्रिपेयर इट कि मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा माइंड में आइडिया हो जाए, 2 मिनट्स का आइडिया होना चाहिए. If you have problem, you can look at my idea. You can look at the idea written here also. That will give you an idea कि कैसे prepare करना है. इसके बाद वो, this is the second part. Here the examiner is not going to talk at all. It's a 3 minute section. 1 minute is your preparation phase. After that you're going to talk. You can look at your notes while talking. तो जो आप 1 मिनट में notes बना रहे हो बोलने के लिए वो आप देख सकते हो. तो this is the time you need to utilize well. ठीक है, मैंने क्या बोलना है वहां पे शॉर्ट शॉर्ट में यू कैन राइट कि मैं पहले ये बोलूंगा बाद में, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, बट मन में आइडिया जरूर होना चाहिए पहले. And now the third part of the IELTS speaking is follow-up questions. Now they are going to ask you some questions based on the topic. So now they can ask you some questions. Indians, like Indians, where do they prefer to watch movies, in the cinema or at home? ठीक है. They can ask you anything related to movies. कौन सी movies India में ज़्यादा चलती हैं? Which movies are popular? Maybe you can say comedy movies are very popular, or you can say action movies are popular like the Bang and all those. You know, Pushpa 2, again an action movie. So action movies are very popular. You can talk about that. Historical movies are very popular. You know, so you can talk about that. Then you can talk about, they have just questions. Why are people watching foreign movies a lot more nowadays? So anything related to movies. I don't know, a lot of students know this, but in follow-ups, along with that along with your English, they're also checking your reasoning. यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं चेक होती है, रीजंस भी चेक होते हैं. दैट इज वाई अ लॉट ऑफ एग्जामिनर्स कीप ऑन आस्किंग यू वाई, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज दे वांट टू नो जो आप बोल रहे हो उसके पीछे रीजन है कि बस कुछ ऐसे ही बोल रहे हो. सो हियर वेन एवर यू टॉक यू नीड टू थिंक एंड स्पीक. टेक योर टाइम. लोग ऐसा क्यों करते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू से पीपल लाइक वॉचिंग टू, वाई डू पीपल प्रेफर टू वॉच मूवीज इन द सिनेमा? तो सिनेमा में क्यों देखना पसंद करते हैं? अब आपको साथ में रीजन होना चाहिए कि सिनेमा में ऐसा क्या है, क्यों क्यों देखना पसंद करते हैं. यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन. एंड अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं होगा उस रीजन से, दिल आस्क यू व्हाई एल्स, और क्या रीजन है. सो यू हैव टू थिंक हियर एंड टॉक. वहां पे कुछ रीजन सोचने पड़ते हैं. सो लाइक दैट. सो आई वुड जस्ट से यू कैन प्रिपेयर वन टॉपिक, like one cue card with one follow-up set and one intro set every day. That's enough if you have 2 months. If you have 1 month, I would say two every day. So that is what I would say the preparation. It's 11 to 14 minutes की होती है speaking. तीन चीजें होती हैं बस. पहले वो 4-5 इंट्रो सेट्स, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस. आपको चाय पसंद है, कॉफी, आपने कहाँ पढ़ाई करी थी, आप बचपन में इंटरेस्ट लेते थे, क्वेश्चंस लाइक दैट, वेरी सिंपल. Then they'll ask you a cue card where you have to prepare and speak for 2 minutes, and the final part will be the follow-up sets. And यहाँ पे आपको रीजनिंग अच्छे से बोलनी है. जब रीजंस आएंगे तो रीजंस भी बोलने हैं आंसर के साथ कि मुझे ये क्यों पसंद है, ऐसा क्यों होता है, समथिंग लाइक दैट. इट लास्ट 11 to 14 मिनट. 11 मिनट्स भी रह सकती है, 14 तक भी जा सकती है, बीच में कहीं भी हो सकती है. उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती है. ओके, एनी डाउट्स नाउ अबाउट द स्पीकिंग पार्ट? सर फॉलोअप क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछते हैं? फॉलोअप क्वेश्चंस ना कई बार बहुत पूछते हैं, कई बार कम भी पूछते हैं. पर अगर फॉलोअप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं ना, मीनिंग दे आर गोइंग टू गिव यू मोर बैंड्स. तो मेरे को तो ये लगता है फॉलोअप ज़्यादा पूछने का मतलब ये होता है कि आपको वो बैंड्स आपके बढ़ा रहे हैं. मतलब बिकॉज दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक मोर. सी, पता है मैं आइल्स में मैं एक प्रिंसिपल बताता हूँ. हम कहाँ पे स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट एट 6. एन एग्जामिनर इज गोइंग टू टेक अस हायर. ही इज गोइंग टू टेक अस हायर. तो वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. अगर आप अच्छा आंसर देते हो, यू आर गोइंग टू मूव अहेड, यू आर गोइंग टू मूव अप एंड अप. सो फॉलोअप्स तीन भी होते हैं. आई हैव सीन इट गॉन अप टू 8 ऑल्सो. सो इट कैन बी एनी नंबर. Depends upon your answers also. अब मेरे लिए बहुत कम थे. I think they asked me about 4 or 5 follow-ups because my answers were pretty long. तो वो हम पे भी डिपेंड करता है. सी, स्पीकिंग तो 11 से 14 मिनट की रहनी है. अगर हम बहुत शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं तो दे आर गोइंग टू आस्क मोर. अगर हम लंबे आंसर्स दे रहे हैं तो दे आर गोइंग टू आस्क लेस. तो वो हमारे पे भी डिपेंड करता है. और ना, हम उनको अपने वे में कर सकते हैं. जैसे हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया में कौन सी मूवीज पसंद है, सो वी टॉक अबाउट कॉमेडी मूवीज. सो अब कॉमेडी मूवीज क्यों पसंद है?
they'll go on comedy movies. Now, for example, one of my students in the exam said, आजकल एनिमेशन मूवीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है. देन दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट एनिमेशन मूवीज. मतलब वो डायरेक्शन अपने आप पकड़ लेते हैं आपके आंसर्स पे बेस पे. दे कैन मेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर आंसर. सो आप उस क्वेश्चन को ना, उस कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट कर सकते हो, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो. तो वो आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है. आप कुछ ऐसा बोलते हो, पहले आप कुछ उल्टा बोलते हो, बाद में कुछ आप और बोल देते हो, तो वो आपको पकड़ भी लेते हैं कि आपने पहले तो ये बोला था, बाद में अब आप ये बोल रहे हो. सो अब मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको फिशिंग पे पूछा, तो वो पहले बोलती है, हाँ मैं बचपन में जाती थी फिशिंग करने अपने पेरेंट्स के साथ. अब वो बाद में उसको पूछा, कौन फिश खानी पसंद है? नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो फिश का नाम भी नहीं लेती हूँ. अब बताओ. मतलब लाइक अभी पहले वो फिशिंग करने जा रही है पेरेंट्स के साथ, अभी वो बाद में बोल रही है आई एम अ वेजिटेरियन. तो उन्होंने बोला यू आर अ वेजिटेरियन बट यू गो फॉर फिशिंग. सो दे वो लाइक, अब फिश क्यों पकड़ते हो फिर आप? उन्होंने पूछ लिया उससे. अब वहां पे जाके वो चुप हो गई. अगर वो पूछ लेती बस एज अ हॉबी, एज अ स्पोर्ट, वी डोंट लाइक टू ईट फिश बट आई डू इट, एंड वो बोल सकती थी मेरी फैमिली में और मेंबर्स खाते हैं, तो मेरे को पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं है. बट उसने वहां पे जाके वो चुप हो गई, बिकॉज वो अब उसने रटा हुआ था. वैसे भी इंडिया में कितने लोग फिशिंग करते हैं, पहले तो उसने बोला ही क्यों. आई थिंक शी शुड हैव सेड नॉर्मली, नहीं मेरे को, मैं फिशिंग नहीं करती हूँ, फिशिंग इज नॉट अ कॉमन स्पोर्ट इन इंडिया, राइट? पीपल नॉट, यस। कोस्टल सिटीज में जाके वो भी करते हैं जिनका प्रोफेशन है, बट एज अ हॉबी पीपल डोंट डू फिशिंग. सो वो झूठ बोला, वो बाद में फंस गई, बाद में उल्टा बोला, एग्जामिनर ने पकड़ लिया उसको. मतलब ही कॉट हर, कि मतलब वेजिटेरियन हो, खाते हो नहीं हो, फिश को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, पर फिशिंग करने जा रहे हो. मेरे को तो समझ ही नहीं मतलब वो अब ऐसे वो पूछ लेते हैं ना फिर वो. सो अपने यू हैव टू, मतलब नो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसको नो बोलना चाहिए था, नहीं करती हूँ फिशिंग, वाई टू लाई. लाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, रीजनिंग भी चेक होती है. आपका रटा हुआ आंसर होगा तो एग्जामिनर इज नॉट हैप्पी विद दैट. सो ही वॉन्ट्स यू टू स्पीक देयर, अपने आप बोलना वो चाहते हैं जो आपके मन में एक्चुअल, आप वो बोलो. आप झूठ बोलते हैं ना, हम फंस जाते हैं, तो स्पीकिंग में भी फंस जाते हैं. रीजनिंग गलत होने लग जाती है, पहले कुछ और बोल देते हैं, बाद में उल्टा बोल देते हैं, रीजनिंग गलत हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है. सो माय माय चॉइसेस कि रीजनिंग बोला. पता है मेरे घर में ट्रैवलिंग मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को पसंद है. तो उन्होंने बोला आपको ट्रैवलिंग पसंद है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं इतनी पसंद, मेरे पेरेंट्स को मेरे से ज्यादा पसंद है. मैंने तो ये बोल दिया. अब वो आगे मेरे को कहीं फंसा नहीं पाया, क्योंकि मेरे से सच ही निकलना था जो निकलना था. तो आई टोल्ड हिम मेरे पेरेंट्स को ज्यादा पसंद है. वेयर वुड ही ट्रैप मी? ही कुडंट ट्रैप मी एट ऑल. सो सो लाइक दैट आई वुड से. सो बस ये सर बोल. जो सर जो ये क्यू कार्ड है, ये इसी क्यू कार्ड के बेस में आएगा नेक्स्ट जो इसी क्यू क्वेश्चन? कार्ड के बेसिस पे फॉलोअप्स होते हैं. फॉलोअप्स बहुत दूर नहीं जा सकते. मतलब मूवीज के आले दुआले ही होंगे. अगर ये मूवीज वाला टॉपिक है तो मूवीज के पास. लेट्स सी द लास्ट टॉपिक, इससे पहले पार्टी, पार्टीज पे होंगे. नो नो सर, मैं पूछ रहा था कि वो जो क्यू कार्ड है ना, जो आप बोल रहे थे कि क्यू जो नेक्स्ट क्यू कार्ड आएगा उसके ऊपर प्रिपरेशन करना है, वो सर वो C20 क्यू कार्ड में से ही आएगा हाँ या हाँ हाँ उसी हाँ. तरह? वो मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ, 99% जो मैं लिस्ट दूंगा उसी में से आएगा. यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू प्रिपेयर इट वेल. ओके. सी, इसके अंदर अबाउट 20, इसके फर्स्ट 25, और जो नई बुकलेट आएंगे उसके पहले 25, तो 25 + 25, अराउंड 50 क्यू कार्ड्स यू नीड टू प्रिपेयर. सो 25 दिन है. सर सर या मेरा फरवरी 8 को है, 7th को है। ठीक है. तो अभी यू हैव 37 डेज, अराउंड 30 डेज, राइट? 35 डेज मान के चले. सो आई वुड या से अभी ना यू शुड बी प्रिपेयरिंग द फर्स्ट 20 फ्रॉम हेयर. और फिर जब ये पहले 20 ये पक्का आएंगे, इसमें से जो पहले 20 है वो पक्का सिलेबस में है. और जो नेक्स्ट 25 है वो मैं बता दूंगा, बाय बाय 8 वो बुक शेयर हो जाएगी यूसुफ. देन यू कैन प्रिपेयर, और उसमें ये भी डल जाएंगे. सो अभी के लिए यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फर्स्ट 20 फ्रॉम दिस बुक. अगर ये बुक किसी को नहीं है, I'll share it with you. Just let me know. I'll share it in the group. You can do it. Not a problem. You can all do it. No charges. I'll share it with all of you. Okay, start preparing. Okay. Any other doubts? Okay. So, Krishna, pattern? So, uh, Yeah, yeah, any?
हाँ सर, Yeah, सर this बोलिए। से essay classes, there is recorded classes in the YouTube. No, the I have doubt about this. The same thing in the website Yes. or different. No, but website is free. There's nothing paid. The Ah, yeah, so the website material it's different, but it's free. You can access both of them. okay. Okay. It's also there on YouTube. Yeah. The links for them are in the YouTube. But I want you to watch these specific videos for the format. So, जो Hmm. है, I want you to watch these specific videos. ये वाले वीडियोस में चाहूंगा कि आप देखो जैसे जो मैं फॉर्मेट्स के लिए आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच दीज वीडियोस एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी गुड। पता है जब से मैंने ये करवाने शुरू करे ना a lot of my students have started scoring 7.5 and even 8 in reading। तो जब से फॉर्मेट्स मैंने करवाने शुरू करे इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बिन 4 years। पर आई बी ऑनेस्ट 2020 से पहले मेरे स्टूडेंट्स के 7 से ऊपर नहीं आते थे। पर अब 7.5, 8, even 8.5 one or two students have scored। 8.5 is just one or two students, but 7.5 and 8 तो कॉमन हो गया। 7.5 तो अब पता है हर दो मतलब हर महीने 2-3 बच्चों के आ जाते हैं 7.5 एंड 7.5 इज नॉट दैट इजी। अगर आप बाकी देखोगे रिजल्ट 7.5 आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे राइटिंग में, ठीक है, पर अब इजीली आ रहे हैं 7.5। Okay, so I will just want you to cover these formats. If you cover, you'll easily score 7 above. So that is सर why, ये yes. सर ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। Okay, I'll share the link with you. It's just the website Makarals, but I'm sharing it right now with all of you कि कहाँ पे है ताकि you don't get lost and you have Where the, in the group or here? I'm sharing it in the group itself अभी के अभी। Okay. Thank you. Thank you. It's done, it's shared। Okay, I'll also share the book for speaking with you। ठीक है, Sir, so yes, so if it is a 1 month plan for preparation for yeah, all 4 parts, I need to take a time out, right, for preparation. yeah, you have to find around 3 to 4 hours चलना every day। अब वो ढूंढना है किसी तरीके से। अब It वो has to be in one go, or it can be like no, throughout. it doesn't need to be in one go, not at all। It can be, for example, writing, you get up in the morning, you you spend 40 minutes, you write an essay, you're done with it। ठीक है, Okay, बस वो कर दिया। अब now you go to work, you prepare 2 cue cards, you can prepare the 2 cue cards at work, you can prepare the 2 cue cards while traveling, like you can listen to it। 5 essays read करने हैं, वो कभी भी read कर सकते हो while traveling। You can read, you can do it anywhere you want, कभी नहीं मतलब लिसनिंग करनी है 30 minutes की लिसनिंग है कभी भी कर सकते हो, रीडिंग करनी है कभी भी कर सकते हो, इट्स Okay. योर। sure, sir. Okay, so it Sure. doesn't need to be 4 hours together. It just needs to be 4 hours. Somehow you need to add up that much time. So I would say 1 to 2 hours needs to be spent on writing. About 1 hour needs to be spent on, like 30 minutes to 40 minutes needs to be spent on speaking, and the rest one hour to 1.5 hours needs to be spent on reading and listening। And reading, I'm not telling you to solve the complete thing every day। Just 20 minutes, 20 एक पैसेज ही करना है 3 दिन, 2-3 दिन सारी करनी है कंप्लीट रीडिंग, बाकी दिन थोड़ा करना है। दैट डे यू कैन स्किप योर लिसनिंग। मतलब 3 दिन जब एक पैसेज करा साथ में लिसनिंग भी कर ली, द 3 days यू डू द कंप्लीट रीडिंग, यू कैन स्किप द लिसनिंग। मेरे को नहीं लगता लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। I Sure. think it's the easiest module। I think you'll all do pretty well। And the only problem I face, my students face, is the spellings, and I'll be sharing those dictations with you। You can practice that। That also 20 to 25 minutes का टास्क है, कभी भी सुन सकते हो, कभी भी आंसर्स चेक कर सकते हो, बीच में पॉज कर लो। It's going to be there with you, ठीक है। सो नॉट अ प्रॉब्लम। अगर स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, देर आर स्टूडेंट्स विद मी who could have scored 8, 8.5, and they scored 7, 6.5 in listening just because of spellings। So spellings are really important। Like, I'll ask you, a lot of you, what's the spelling of tuition? Can anyone answer? Not my normal classroom students, what's the spellings of tuition? Anyone? How many of you think this is correct? No, Tuition. Yeah. Yeah. So the I is also there. Did you know this?
Yes. Yes, a lot of students make this mistake. So these are simple words, not very complicated words, but students get them wrong. Okay, another word that embarrass. Anyone? Spellings of embarrass? EMBRACE. No. Embrace No. nahi. Embarrass. EMBRAW. Embarrass. 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 So this is a common mistake that students make because there's a double R and double S. So this is another spelling that students get it wrong. Embarrass. Embarrass has a double R and a double S. Okay, so this one another. Meaning, Embarrassment. We feel embarrassed when something happens, like something bad happens or something happens that everyone laughs at us. Stupid things. Like once I went on a trip with my friends and I fell down and everyone laughed. So that was embarrassing. Embarrassing like that. Like you say something, it's funny, it's embarrassment. So. You get the point. Like others laugh at you. You feel like, oh, what happened, and then like yes, yes. embarrassed. It's a feeling. So it's good. Continuous is another word. This people get it wrong. They don't put the U after the N. There's a U, NUOUS. So continuous words like that. So do that part. More listening, but they're simple, simple words. Another common word that people don't even know, vacuum. Vacuum, most of my students get it wrong. They put double C. It's not double C, it's a single C and double U. So this is another spelling that a lot of my students get it wrong. Restaurant, another word. Like it's a simple word. See, not a complicated word. Restaurant. They don't put this part right. Okay. So there's another word, separate. This is another word that I get. I used to be wrong before this. I used to think there used to be an E here. There's no E, there's an A after P. Separate. SEPARATE. So like that. So just practice that also for listening. That's all that you need. These are just ma'am has made a compilation of 800 common words in listening, and there'll be an audio. The audio will be recorded. You just need to listen to the audio, and you just need to write down the spellings. And then she has made another audio in which she speaks out the spelling, so you can check it on your own. किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने आप कर सकते हो काम ये। और जो गलत होगा वर्ड उसकी लिस्ट बना लो कि आपका पहली बार गलत हुआ था, उसको रिवाइज कर लो एट द एंड ऑफ द वीक। सो लिसनिंग में स्पेलिंग्स के लिए आई से दिस बात, एंड इससे राइटिंग ऑल्सो विल इम्प्रूव, नॉट ओनली लिसनिंग बट राइटिंग ऑल्सो विल इम्प्रूव। So Abhi, I think one of my students, she scored 25, and matlab 21, and उसकी requirement exam में 24 थी, like in the mock test she scored 21 और उसके 3-4 गलत थे spellings के कारण, so she could have easily scored 25 and gotten her required bands. The requirement was 23. तो मतलब spellings के कारण we don't lose out. I just want to say that. So for listening, I would say that. And listening, अगर नहीं है, ma'am will share them free of cost. Just ask ma'am. If you're an enrolled student, ma'am share वैसे ही कर देते हैं. आपने किसी भी मॉड्यूल के लिए, sorry, am I audible? Yes, sir. ओके, तो आपने किसी Yes. मॉड्यूल के लिए मैम से कभी भी कोचिंग ली हो, मैम मैम शेयर्स इट, मैम कभी मना नहीं करते लिसनिंग के लिए, मैम विल शेयर इट विद यू, ऐसे ही शेयर कर देते हैं। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर लिसनिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो मैम ने भी वही शेयर करना है, कुछ मेरा मटेरियल नहीं है ना, देयर इज नो एफर्ट, सो वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एनी ऑफ दैट। इट्स नॉट माई मटेरियल, इट्स somebody else's material, it's Cambridge material. Ma'am is just sharing, it's in a compilation form, it's just for your practice, no charges. सर यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसके ये यूट्यूब हैं पे भी चैनल। पढ़ा, या जस्ट प्रैक्टिस, आपने 10 से 15 लिसनिंग्स प्रैक्टिस करनी है बिफोर द एग्जाम। लिसनिंग इज नथिंग बट, अगर किसी को लिसनिंग का पैटर्न नहीं पता, आई क्विकली शो यू दैट पैटर्न एज वेल, रियली क्विकली, और हाउ डू आई अटेम्प्ट। सो if you go to YouTube and just practice, sorry, just hold on. Okay.
Okay. So, for those of you, Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 90 days. Test 2. it's Part like 1. this. It's like this. So they're going to speak something and you're going to attempt questions like that. That's it, based on that. So they're going to speak You have an eye for detail. That's fine. like that. There are 40 questions, 4 sections. हर एक section में 10-10 होते हैं. पहला जो section होता है, that's pretty simple. It's a conversation between two people. The second section is also pretty simple, like that. 10 questions. It can be any form. It can be in the form of MCQs. It can be in the form of blanks. It can be in the form of a map. कि ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. Um, so there are 40 questions like that. And we just have to attempt them. They are really simple. Side by side attempting होते हैं. Yes. सर मैं मैप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता मैप में पता है हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? बिकॉज वी डोंट स्टार्ट एट द राइट लोकेशन. तो पता है जैसे कि क्या अब यहाँ पे ना दे वुड मे बी स्टार्ट यू विद साउथ एंट्रेंस. अब वो ना बस ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे हैं. एक बार वो मिस हो गया ना कि हम कहाँ पे हैं, वो सारी गड़बड़ हो जाती है. जैसे यहाँ पे 2 एंट्रेंसेस है, एक वेस्ट एंट्रेंस है, एक क्या है. साउथ एंट्रेंस. अब ना वो बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पे साउथ एंट्रेंस के बिल्कुल पास या वेस्ट एंट्रेंस के पास. सो वो ज़रूर ध्यान से सुनना है कि वो कहाँ से हमें एंटर करवा रहा है. अगर हम वो मिस हो जाता है ना, सारा गलत हो जाता है. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट, अदरवाइज इट्स रियली सिंपल. एंड यूसुफ हम ये कर लेंगे, विल सॉल्व वन इन द क्लास टुगेदर. तो हम इकट्ठे कर लेंगे सॉल्व वन जस्ट फॉर यू. आई डू वन विद यू रियली क्विकली. इट विल नॉट टेक मोर देन 10 minutes एंड यू कैन गेट एन आइडिया. So it's a really simple thing. 30-25 minutes की listening होती है in general again. And उसके बाद आपको ये अटेंड करने होते हैं. जीटी और एकेडमिक दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. आई वुड जस्ट से अगर आपके पास 1 month है, 10 से 15 का गोल होना चाहिए कि एग्जाम से पहले हो जाए. 10 to 15 should be solved by you. If you have a goal of 2 months, you should try to solve at least 30 listenings. So 30 listenings मतलब 2 दिन में एक कह रहा हूँ मैं. 2 दिन में एक का टाइम you have to find. 30 to 35 minutes listening का टाइम है. That's it. If you have 1 month, 3 days. 2 दिन में एक करनी है बस. इतना कर लो बहुत है. इससे ज़्यादा करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग रॉन्ग रिपीटेडली, फिर थोड़ा ध्यान दो कि मैं बार बार कुछ गलत क्यों कर रहा हूँ. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, मेरे को बताओ. नहीं तो ये बहुत ईजी है. आई थिंक ईजिली स्टूडेंट्स ये सबसे ईजी लगता है. ठीक है. मतलब इसी के कारण बैंड्स बनते हैं. जो मेरे टीचर्स हैं ना, जिनके 8-8 बैंड हैं, उनके 9-9 है लिसनिंग में. लाइक आई हैव टीचर्स हु हैव स्कोर्ड 8 बैंड्स ओवरऑल. तो 9 बैंड्स इसमें ही होते हैं. तो मेरे भी 9 बैंड्स है इसमें. मतलब मेरे ओवरऑल 8.5 है. इसी के कारण है. लिसनिंग एंड रीडिंग 9-9 है. राइटिंग में 8 है, कम है. स्पीकिंग में भी कम है, 8 है. इसके अंदर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस. रीडिंग एंड लिसनिंग लेके जाती है बैंड्स. स्पीकिंग एंड राइटिंग में कम होने के बावजूद इसमें बैंड्स आ जाते हैं. तो बैंड्स आपके ओवरऑल अच्छे बन जाते हैं. सो दिस इज़ द ईजी पार्ट. डू इट. इसमें बस मेरे को स्पेलिंग्स का रहता है. बाकी इफ़ यू प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर विद इट. एंड मैम विल शेयर. नहीं तो मैं बता रहा हूँ फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, कहीं भी जाओ. यू सी. मैं तो यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करता हाँ, हूँ. यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है. जस्ट पिक. मैंने क्या सर्च मारा देखो, लिसनिंग आइल्स, इतना मटेरियल है. आई वुडेंट वांट यू टू स्पेंड मनी ऑन दिस. क्यों करने पैसे खर्च इस पे. जस्ट करो. करो, अटेम्प्ट करो. चलो आगे चलो. चेक योर आंसर्स एट द एंड. दिल चेक, मेक यू चेक द आंसर्स ऑल्सो. ये लो, चेक करो आंसर्स, मूव फॉरवर्ड. दैट्स इट. डू द नेक्स्ट लिसनिंग. सो व्हाई So वेस्ट actually, MCQs is also a problem for me. in listening? Yeah, MCQs like that We I'm not have this. able to focus on the same. तो विल हैव दिस लिसनिंग एंड मैप्स एक दिन कर लेते हैं. कल कल या परसों. कल तो आई एम सॉरी, कल का भी मेरे को बताना था. कल आई वी हैव एन इवेंट फॉर January 1st. सो कल देयर इज नो क्लास. बट डे आफ्टर टुमारो वी कैन डू द लिसनिंग. ऑन 2nd वी कैन डू द लिसनिंग. सो Thank you, sir. ठीक है. वी कैन डू मैप्स एंड MCQs बोथ ऑफ देम. सर एक मतलब मैं प्रैक्टिस किया था 26 आया था. हाँ. मगर उसमें उसमें ना कुछ है ना 3 4 5 ऐसे थे जो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक. ओके. वही तो मैं कह रहा हूँ. स्पेलिंग्स के लिए आई शेयर द डिक्टेशंस विद यू. सो फ्रॉम टुमारो एवरी डे जस्ट वो 17 डिक्टेशंस हैं. जस्ट सॉल्व देम. लाइक राइट द वर्ड्स. मैम बोलेंगे वो वर्ड्स. पता है वो कहाँ से पिकअप करें वर्ड्स?
from like popular listings. जैसे डिस्काउंट वर्ड हो गया, ये भी बच्चे गलत कर देते हैं, लाइक दैट, लाइक विवन हो इज अ प्लेस, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स करने हैं। सूट, जैसे सूट के स्पेलिंग ये गलत हो जाते हैं, ठीक है, मैं मतलब ऐसे हाँ, वर्ड्स। मैं एक सिविल का जो मैं लिसनिंग में एक सिविल था, सिविल वार था, तो वो मुझे SIVI लिखना था, मैं CIVI लिखना था, मैं S लिख। हाँ, तो वही है, सिविल, सिविल के स्पेलिंग्स हमेशा सी से स्टार्ट होते हैं, CIVIL, वो हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, तो नाउ यू लर्न दैट ना, वो छोटे छोटे वर्ड्स गलत हो जाते हैं, लाइक आई एम जस्ट सेइंग, तो वो जरूरी है। देखो ये कोई वर्ड्स, यू सी दीज वर्ड्स आर डिफिकल्ट, नो, बट टेलर में ई डाल दी, TIAILER, ऐसी ऐसी गलतियां हम कर आते हैं। लाइक अनदर वन, मतलब माई स्टूडेंट मेड इट लाइक, पता नहीं क्या स्पेलिंग, थीफ के स्पेलिंग में ई पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया, लाइक दैट मिस्टेक्स हैपन। Okay, so this is listening. Then what we were doing recently, जो मैं रोज क्लास में कराता हूँ वो रीडिंग है। रीडिंग again you can ask ma'am for some material, otherwise I would say कि यहाँ पे I think you should buy one book, because बार बार इंटरनेट पे सर्च मारना takes a lot of time, और रीडिंग ऐसे होती भी नहीं है स्क्रीन पे देख के। तो आई वुड जस्ट से कि उसके लिए आई वुड से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, कोई भी एक बुक, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय ऑल थ्री, जस्ट पिक वन बुक, बाय इट, स्टार्ट सॉल्विंग रीडिंग्स। बाकी मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, रोज का एक पैसेज करना है, पूरी रीडिंग नहीं करनी है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ पूरी रीडिंग क्या, मेरा क्या मतलब है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू, इफ इवन इफ यू सॉल्व वन रीडिंग, मतलब वन पैसेज, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, नॉट अ प्रॉब्लम। एक भी कर यस, लीजिए, प्रैक्टिस की बात है बस, पर अच्छे से। उसके बाद किस पे फोकस करना है? गलतियों पे। इफ यू डोंट फोकस ऑन योर मिस्टेक्स देन इट्स पॉइंटलेस। Can't open So what about the journal reading material? जनरल का भी मैम शेयर कर देते हैं, जस्ट आस्क मैम, ठीक है मैम, इफ यू आर एनरोल मैम शेयर्स इट। नहीं तो पता है, अगर वो भी नहीं है, इफ यू नॉट एनरोल्ड ऑल्सो, there's a lot of free material available on the internet, भी आप सर्च मार लो मिल जाएगा, but then you have to get them printed out। या फिर जनरल की भी बुक है, you can order that out also, order that, one of the books for general is also available, I'll show you। So for general, at the beginning I said for GT I'll just recommend two books, एक writing का book और एक reading का book। Speaking का book will be shared free with you, listening is also free। So एक reading का book और एक writing का book I just recommend कि वो आप कर सकते हो। और वैसे अगर किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ रीडिंग कैसे होती है, रीडिंग का मेरा क्या मतलब है। जैसे अभी जो आया था पैसेज, आई ऑल्सो शो यू दैट। तो रीडिंग का मेरा ये मतलब है कि 3 पैसेजेस होते हैं, मैं पूरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक पैसेज कर लो बस दिन का, और 2-3 दिन हफ्ते में पूरा कर लो। तो वरना एक हफ्ते में करो, एक एक दिन में एक करो, अपनी गलतियों पे काम करो, मेरा कोई क्वेश्चन गलत आया, क्यों आया, क्या आंसर आना चाहिए था, ठीक है, बस इतना करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, पता है ये हमेशा मेरे स्टूडेंट्स का गलत होता है, मैं हर बार देखता हूँ, हर बार, मतलब जब भी नए बच्चे आते हैं वो गलत होता है। अब ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पज आर ग्रीन सी टर्टल्स किल्ड बाय पीपल, किस पर्पज के लिए ग्रीन सी टर्टल्स किल्ड बाय पीपल। अब आप जाओगे यहाँ पे और आप देखो, ओके, ओके, अच्छा अब यहाँ इतना पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ। अच्छा मुझे बताओ, ये किसके बारे में बात हो रही है लाइन, ग्रीन सी टर्टल के बारे में कि लेदर बैग के बारे में, ये लाइन किसके बारे में बात कर Leather bag. लेदर, Talking about leather bag. लाइक, रही? लेदर बैग, लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन सी टर्टल। वो कह रहे हैं लेदर बैग डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, सी टर्टल्स, कैसे डिफरेंट है? नॉट ऑफन किल्ड फॉर फॉर इट्स मीट, मतलब लेदर बैग को किसके लिए नहीं मारा जाता, मीट के लिए, ग्रीन सी को किसके लिए मारा जाता है? मीट के लिए। मीट के लिए। तो अब आंसर मीट आना है, पर यहाँ पे बच्चे क्या देखते हैं, इज नॉट ऑफन किल्ड फॉर द मीट, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते। देखो
अब मैं तुम्हारे को ना, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, आई विल टीच यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके. आई, अनलाइक माई फ्रेंड, लाइक बैडमिंटन. मेरा ये क्वेश्चन है, किसको बैडमिंटन पसंद है, बस ये बताओ. मुझे. मुझे हाँ, अभी यहाँ पे अब कईयों को लगता है, पीपल थिंक ये मेरे फ्रेंड की बात हो रही है. मेरे फ्रेंड की बात नहीं हो रही है. सब्जेक्ट आई है. मैं अपने फ्रेंड से डिफरेंट हूँ, क्योंकि मुझे क्या नहीं पसंद है. क्योंकि मुझे क्या पसंद है, बैडमिंटन. अगर मैं यहाँ पे डू नॉट लाइक लिखता, मुझे नहीं पसंद था. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम डिफरेंट टू माई फ्रेंड, वो पहला पार्ट है. मैं अपने फ्रेंड से डिफरेंट हूँ. कैसे डिफरेंट हूँ, क्योंकि मुझे क्या नहीं पसंद है, डू नॉट लाइक बैडमिंटन. ये बात हो रही है. आई एम नॉट सेइंग मेरे फ्रेंड को नहीं पसंद है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब ये क्वेश्चन एक बार, कई बार गलत होता है बच्चों का. उनको लगता है उनके फ्रेंड की बात हो रही है. अब यहाँ पे पेपर में बताओ क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन आ जाएगा, द फ्रेंड डज नॉट लाइक बैडमिंटन. क्या आंसर आएगा इसका, बताओ. ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. it's false. इट्स फॉल्स. फॉल्स. आई डू नॉट लाइक बैडमिंटन, और मैं अपने फ्रेंड से डिफरेंट हूँ, तो मेरे फ्रेंड को क्या है, पसंद है. तो इसलिए आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स. अब मैं बता रहा हूँ, a lot of students would have marked this true. Do you agree with me कि मार्क करो और यस. true, है ना. तो ये गलतियां अब एक बार सीख लो ना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपनी गलतियों पे वर्क करो. नो प्रॉब्लम, ये गलत हुआ. अगली बार ऐसा क्वेश्चन आया तो पता होना चाहिए, यहाँ पे मेरी बात हो रही है, मेरे फ्रेंड की नहीं हो रही है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद सच अ क्वेश्चन. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. ओके. सो दैट इज व्हाट आई वुड से. तो ये ऐसे मैं प्रिपरेशन करूंगा. मैंने दोबारा एक बार मैं रिवाइज, आई टेल यू अगेन अगेन अगेन, लेट्स सी. अगर किसी को कुछ नहीं याद, किसी को दोबारा, अगर 1 मंथ में करना है, 6 ऐसे टाइप्स हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ से पैटर्न्स करने हैं. पहले वो जाके यूट्यूब वीडियोस देखो, या वहाँ पे जाके जो पढ़ा हुआ पीडीएफ, अगर यूट्यूब वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है, यू नॉट एबल टू मेक नोट्स, साथ में वो करते हुए दो दो एसेस के फॉर्मेट्स हर हफ्ते तुमने सीखने हैं. फिर तुमने 6 एसेस लिखने हैं, 3 फॉर ईच फॉर्मेट, एंड मैम को चेकिंग के लिए भेजने हैं. दैट शुड बी योर गोल फॉर एसेस. अगर तुम्हारे पास 2 मंथ्स हैं, तो यू कैन डू 1 essay टाइप इन अ वीक. दैट्स इट, नॉट 2. ठीक है. एंड सेम विद ग्राफ. 6 ग्राफ्स हैं, हर हफ्ते एक. अगर 2 महीने, अगर 1 महीना है तो हर हफ्ते दो. और फिर 3 3 लिखने हैं. हर एक ग्राफ और ऐसे को 3 बार लिखा होना चाहिए, मतलब 3 ऐसे हर एक टाइप के, 3 ग्राफ हर एक टाइप के. दैट शुड बी योर गोल. एसेस में साथ में तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुमने कम से कम कितने एसेस पढ़े हो, 25. 25 शुड बी योर गोल, कि 25 एसेस में पढ़ लूँ. तो हफ्ते में 25, नॉट वेरी डिफिकल्ट. 5 पर 5 पर डे. और 2 दिन में हॉलीडे भी मान रहा हूँ, सैटरडे संडे. नहीं तो सैटरडे को ही पढ़ लो 10, संडे को पढ़ लो 10. ऐसे कर सकते हो इफ योर वीक्स आर वेरी बिजी. बट मैं बोलूंगा कि 25 ऐसे कभी भी पढ़ सकते हो. यूटिलाइज योर टाइम फॉर ट्रैवलिंग. यूटिलाइज वॉट एवर टाइम यू गेट, इन वॉट एवर वे यू गेट, डू इट. अगर 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 पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं बोलूंगा मैम की यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस सुन लो. वहाँ पे भी मैम ऐसे ही डिस्कस करते हैं, मतलब 4 5 ऐसे ही हो जाएंगे बड़े बड़े. यू जस्ट हैव योर हेडफोन्स इन योर ईयर्स, यू कैन लिसन टू दैट एंड गेट द पॉइंट्स डन. बस पॉइंट्स जानने, मेरे को आइडिया जनरेशन के लिए फेस चाहिए, ये ज़रूरी है फॉर आइडियाज. ठीक है. सो दिस इज इट. स्पीकिंग मैंने बताया, द बुक विल बी आउट बाय 8 जनवरी. वो मैंने तुम्हारे सिलेबस के लिए बोला था अराउंड 50 तुम्हें प्रिपेयर करने हैं. तो 2 पर डे शुड बी योर गोल. अगर 1 महीना है, अगर 2 महीने हैं, 1 पर डे इज इनफ. जस्ट प्रिपेयर 1 प्रॉपरली. उसके ऊपर फॉलो अप्स, आस्क योर टीचर कि मेरे को अच्छे से पूछो. मैम को बोलो, मैम विल असाइन योर टीचर, 1 on 1 टीचर. तो 1 on 1 जब स्पीकिंग होती है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर ऑन कन्वीनियंस. सो दैट इज हाउ आई विल से स्पीकिंग. रीडिंग का मैंने बोला था, एक पैसेज एक दिन में कर लो. एक तो मेरे साथ ही करते हो, तो 2 3 दिन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है. अगर मेरे साथ कर रहे हो ठीक है. 2 3 दिन तुमने पूरी रीडिंग खुद से भी करनी है. यू हैव टू सॉल्व द होल रीडिंग. 2 3 दिन हफ्ते में पूरी रीडिंग करो. वो जरूरी है फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे से तो तुम सीख रहे हो, वहां पे तुम अपने आप वो अप्लाई कर रहे हो, वो अप्लाई करना भी जरूरी है. एंड उसके बाद उनके डाउट्स पे, उनकी गलतियों पे वर्क करना बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू डू दैट फॉर रीडिंग. लिसनिंग जस्ट प्रैक्टिस. 10 to 15 प्रैक्टिस हो जाए बहुत है. और थोड़ा सा डिक्टेशन, आई शेयर द ऑडियोस, वो प्रिपेयर कर लेना. वो आई शेयर विद एवरीवन. दैट इज नॉट
on anything. If you're in the group, it'll be shared from tomorrow itself. My teacher will share it with you. Every day, one dictation set along with the answer set. Just listen to that. मैम बोलेंगे पहले ऑडियो में, तुमने स्पेलिंग्स अपने आप लिखने. मैम बोलेंगे जैसे वर्ड accommodation. What's the spelling of accommodation? Anyone? ACC No, double C. O A double C. D. No, B. Accommodation. DATION. DATION. Is it correct or wrong? Dictation. There's a No. double M. There's a No double M. more P is there. No P. Double M. Double M. And two M's. Okay. Two C's and two M's. See, easy spellings, but we got it wrong. Easy word, common word. So I would just say practice this. ऐसी गलतियों पे marks ना lose हो जाए. See, we come back from the exam, we think it's true. Our answer is right, but the answer is wrong. Even if the spellings are wrong, the answer will be wrong. ठीक है? So that's how I'll chalk out my plan. अब बताओ, I've covered everything that you have to cover in which way. If you have any doubts, you let me know. नहीं तो मेरा ऐसे plan होगा. मैंने books का बता दिया. For academic, I would want you to invest in 3 books. One for reading, just one for now. अगर वो solve हो जाए पूरी, तो अगली की बात करेंगे. एक कर लो एंड आई गिव यू एन इंसेंटिव. चलो एक बुक तुम अपने आप पढ़ो पूरी की पूरी सॉल्व बाय एंड डू इट. अगर एक बुक पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट वन मेरे से. बस तुम करो तो सही, एक पूरी सॉल्व करो. यू शुड हैव सॉल्व ऑल द 20 क्वेश्चंस. और मैं फिर कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हारे को पता होना चाहिए आंसर कैसे वो आया. मतलब आई वॉन्ट यू डू इट प्रॉपरली. मेरे लिए वन बुक यू डू इट ऑन योर ओन. वन बुक आई इफ यू हैव डन वन वॉल्यूम, एनी वन, पिक एनी वॉल्यूम, मेरे को वो भी फर्क नहीं पड़ता. वॉल्यूम 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो. तुम एक करो, अपने आप पूरी करो. द नेक्स्ट वॉल्यूम फ्रॉम मी. ग्राफ की बुक वन दैट यू शुड डेफिनेटली गेट. और एक एसएस की बुक, क्योंकि आइडियाज कहीं से तो पढ़ने, वो बुक होनी चाहिए. सो दिस इज द 3 बुक्स फॉर अकेडमिक. फॉर जीटी जस्ट 2 बुक्स. वन फॉर एसेज एंड लेटर्स, वो एक ही बुक है. एंड वन फॉर रीडिंग, जस्ट 2 बुक्स. सो दैट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर. अगर अब राइटिंग चेक करानी, स्पीकिंग चेक करानी, दैट इज अ सेपरेट पार्ट. सो आई वुड जस्ट से दैट. बट यहाँ पे ये तो अपनी प्रिपरेशन भी खुद से भी स्टार्ट ऐसे कर सकते हो तुम. दैट्स इट, without doing anything. So that is how you can. So any other questions that you have, ask about preparation और कोई कुछ करने का तरीका. ठीक है. 1 or 2 days I'm going to keep in the week. सर जी. Yes, Krishna. हाँ सर, अभी जो इससे पहले आप थोड़े वीडियोस दिए थे ना वो एकेडमिक के लिए, Yes. तो उसके अलावा फिर ये बुक भी लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए सर? हाँ, ये बुक्स मैं बोलूंगा 3 बुक्स. जस्ट 3 बुक्स. एक रीडिंग की, एक ग्राफ्स की, एक हाँ ये 3, ये ये 3 लेना. हाँ पूरे मतलब ये राइटिंग, ये रीडिंग का ही है. हाँ, एक एक रीडिंग का राइटिंग है, का, एक रीडिंग एक का है रीडिंग ना? का, एक राइटिंग का है. 2 राइटिंग के. एक रीडिंग का, 2 राइटिंग के. ये हाँ वॉल्यूम सर. 1 लेना है, तीनों नहीं लेने. एक लेना है, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो. या तो वॉल्यूम 1, या तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3. कोई फर्क नहीं है तीनों में, बस डिफरेंट रीडिंग्स हैं. एक बुक ले लो बस, ताकि खुद से कर सको. अच्छा, तो ये अमेजन से ऑर्डर करना है हाँ? या अमेजोन से कर सकते हो, वेबसाइट से भी कर सकते हो. जहाँ पे अच्छा, जहाँ पे मिल जाए, अच्छा मिल जाए, जहाँ मर्जी. यू कैन बाय फ्रॉम अमेजोन और द वेबसाइट, और our वेबसाइट मकड़ाल से, एनीवेयर यू कैन ऑर्डर. ठीक है. इफ यू डोंट फाइंड देम ऑन अमेजोन, अमेजोन पे होना चाहिए, पर अगर नहीं होगा तो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर आल्सो. बोथ आर फाइन. अमेजोन पे ना फास्ट डिलीवरी होगा, तो पहले अमेजोन पे ट्राई करना. आई एम बेस्ड इन अ स्मॉलर सिटी, तो मेरे से जब जाता है मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है. तो पहले अमेजोन पे मिल जाएगा, तो अमेजोन पे ट्राई करना. अगर अमेजोन पे नहीं मिलता, देन गो फॉर द वेबसाइट. ओके. कौन सा बुक्स में कह रहा हूँ मैं वो दोबारा. सॉरी सर, मैं बता क्वेश्चन देता हूँ कौन सी बुक्स. बिकॉज आई नीड अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन दिस. आई टेल यू, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, मैं कौन सी बुक्स कह रहा हूँ. ओके. सर वो आपका आ गया. जो ये देखो, आई एम टेलिंग यू. एक तो फॉर जीटी आई वांट यू टू गेट 2 बुक्स. एक तो ये जीटी रीडिंग्स,
एक ये जीटी एसेस एंड लेटर्स, बस 2 बुक्स और कोई बुक्स नहीं, एक एसेस एंड लेटर्स पे एक रीडिंग्स पे, और कोई बुक की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल दैट यू नीड। और लेटेस्ट एडिशन लेना, मैंने भी वेबसाइट को अपडेट नहीं करा, मेरे से आएगी तो लेटेस्ट ही आएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं अमेजोन भी खोल देता हूँ। पर एकेडमिक के लिए यू हैव 3 बुक्स। वन इज फॉर एसेस, ये वाली academic IELTS essays. One is for graphs, this one, yellow one, IELTS graphs, and one is for reading. Reading के लिए आप कोई भी ले सकते हो। There are 3 volumes, volume 1, volume 3 और volume 2। कोई भी अपनी मर्जी की एक ले लो, whatever you wish। तीनों में रीडिंग्स हैं। कोई भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, कोई भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, नॉट अ प्रॉब्लम। एनीथिंग यू वांट टू डू, योर विश। रीडिंग्स करनी है बस, प्रैक्टिस के लिए कुछ करनी है। एक पूरी कर लोगे, नेक्स्ट बुक फ्रॉम मी। एक पूरी सॉल्व कर लो, नेक्स्ट बुक मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये भी मेरी तरफ से हो गया। चलो, अब तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है। गिवन यू द मोटिवेशन फॉर न्यू ईयर। सो इज इट क्लियर फॉर दिस वन? For GT, just these 2 books, GT Readings and GT Essays and Letters. That's it. Nothing else that you need to purchase, books wise. For academic, you need to go for 3 books. One is graphs, one is essays, this one, academic essays, one is this crafts one, and one is the reading, one reading book, volume 3 or volume 1 or volume 2. Any book that you want to get, you can do it. यहाँ पे तो डायरेक्ट लिंक है बाय करने का, मैं अमेजोन पे भी चेक कर देता हूँ, अमेजोन पे भी इजीली मिल जाएंगी, पर सारी की सारी यू कैन जस्ट मैच। बस आप में देख लेना 2024 लिखो एडिशन, या 2023 भी चल जाए, 2024 लिखो, सॉरी 23 लिखो, 24 लिखो, बस ये ध्यान रख लेना। अभी I don't think internet is working. Um, could you hear me? Can you hear me? यस सर। Okay, वो मेरा इंटरनेट थोड़ा वेबसाइट। Okay, so like that. Speaking का book, I'll be sharing free. You don't need to spend any money on that. If you're a student, वो मैम शेयर कर देंगे, जब रिलीज होगा तब वो शेयर हो जाएगी। अभी वाला पुराना एडिशन चाहिए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। You can start practicing from there. सो पुराना एडिशन में शेयर कर देता हूँ, जब नया आएगा तो वो शेयर हो जाएगा। योर स्पीकिंग टीचर विल शेयर इट डायरेक्टली विद यू। तो ये तो अभी आई एम वरिड, क्योंकि मेरे को इस वीकेंड पे जागना पड़ेगा। आई विल हैव टू राइट ऑल दैट। सो ये फेज आना है अभी मेरे लिए। नेक्स्ट इज लिसनिंग, वो मैंने बता दिया, वो मैम शेयर कर देंगे। जस्ट आस्क मैम फॉर सम मटेरियल, शील शेयर इट। नहीं तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, बस यूट्यूब पे जाके आइल्स लिसनिंग सर्च मारना, भर भर के मटेरियल है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन दैट। यूज करो द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू फ्री, यूज दैट। रीडिंग, बाकी रीडिंग के लिए मैंने बुक बता दी, बाकी मैं करवाता ही हूँ क्लास में। यू गेट टू प्रैक्टिस दैट विद मी इन द क्लास। ओके, एनीथिंग एल्स? Any doubts, Remy? Okay, you have so many messages. Okay, you're just telling me the spellings. Accommodation, yes, good. Krishna, Raman, Nuria. Okay. Embarrass, you got it wrong. Tuition is right. Okay. A lot of spellings are like that, right? People get it wrong. Any other spelling that I think are complicated? Um, oh, I don't know. Yeah, this is what happened to my student. It happened. She got the word steal. Now, what would your spellings be? Tell me. Steal के क्या होंगे? STEEL। अच्छा, और अगर चुराने वाला होता तो ये कौन सा स्टील? STE। STEEL. हाँ, तो उसको जो आया था उसने उल्टा लिख दिया, बस ये। Mm-hmm. ठीक है, तो ये हो गया। स्टेशनरी, जो किताबों वाली होती है, उसके बताओ स्पेलिंग्स। स्टेशनरी। बुक्स, द बुक स्टेशन। STATION A AR. NARI. ओके, अच्छा, और जो खड़ा है एक जगह पे, उसकी स्पेलिंग्स? नॉट मूविंग Standing. या नॉट मूविंग? स्टेशनरी। STANDING. नो नो, स्टेशनरी ओनली, बट नॉट मूविंग। स्पेलिंग सेम है कि डिफरेंट है? Say the spelling I same. think same है. सेम है, तो लेट मी Yes. सरप्राइज यू नाउ। ठीक है, Different. डिफरेंट हैं, और तुम्हारे पहले वाले स्पेलिंग्स गलत थे। ठीक है, so this is again a common word, and even I would have gotten it wrong to like before I started teaching IELTS.
So I'll be honest with you, but मैंने सीखा IELTS में सीखा. So the stationery, which is your books वाला stationery, के spellings में E आता है. Materials for writing and for using in offices, stationery. That's with an E. And जो दूसरा वाला stationery है उसमें ये आता है. Special paper for writing letters on, that is stationery. And वो जो books वाला जो दूरा खड़ा है, not moving, उसमें ए आता है. So the E one is the pencils one, and the pencils, the paper and everything, pens. And this one with an A is not moving. Okay. I hope you learned this if you didn't know this. Okay. So is it clear? Yes, sir. With an E is the pencils one, and with an A is the not moving one. Okay. Sir, vehicle. Vehicle, VEHI. Yeah, I think you'll get it right. Yeah, this is also CAL, students do it, but it's CLE. This is another common spelling that students get it wrong. VEHICAL. I sometimes very confused. No, with CLE. AL is not a word itself. AL तो कोई word ही नहीं है. This is not a word. Okay. VEHICLE. Vehicle. Okay. Any other doubts, anyone? Okay. So Yeah, this stationery, sir. registration. Excuse me, this stationery, what Stationery with an E is the I pencil. could know. E is the pencil. Yeah, the pencil. Paper, pens, envelopes, all that. Okay. Okay. And with an A, it's not moving. Yeah. Very okay. Not moving. Okay. With an A, not moving. Is it clear? So this is something that my student got wrong. She Yes, sir. Yeah. So these things happen. So let's be prepared for it. Okay. Easy words, but we get them wrong. Okay. I made a plan for you. You know where to go now. You can start from there. Just pick up the format of one essay and one graph. If you don't understand it, I'm there. You ask me, क्या आप करा दो class में? I'll do it. I'll cover it in the class. It will not take me much time to cover. Just pick up one bar and one essay. मैंने एग्जाम से पहले Jasmine और आयना I covered all of them in 1 hour, all the essays. सारे essays मैंने 1 घंटे में करवा दिए थे. मतलब इतने जल्दी हो जाता है, पर पहले आता हो तो रिविजन कराई थी. And I'll also cover the revision with you before your exams. But अभी तुम ये करो अपने आप. ठीक है? And you know what happened with them? जो मैंने revision में ऐसे कराया था ना, what happened? You know that? यस वही आया था सर. वही आया था. मैंने वो करवाया revision में, मैंने वो ऐसे करवाया. यस सर, बैन ऐसे में. And ऐसे में मैंने वो example दिया और वही आ गया पेपर में. वही आ गया सर. यस. हाँ. So if you don't know, this really happened. I'm not kidding. So you go to you and sorry, just hold on. Sir, it's good luck actually. I'll show you the video that I upload. No, this is mine. Yeah, not mine. Second ruko. Yeah, this one. To open ma'am's one. No, ये मेरा नहीं है. पता नहीं ये कैसे. नहीं सर, आपका वीडियो भी है, मतलब यूट्यूब पे आपने अपलोड किया है, बोला वीडियो भी सर. ओके, नहीं मैं वो नहीं कह रहा था. मेरा अकाउंट है. Okay. Yes. It's not my account. It's yeah, this is yeah, sorry. No, this is not. I want to open Chrome. ऐसे है ना, वो मेरे पास डिफरेंट यूट्यूब अकाउंट्स है. मेरे को डिफरेंट वाले में शो करना. ओके. So I covered by chance वो हुआ, not like Yes sir, by chance. yeah, by chance. So I did share this all essays in short. और मैंने बाद में पब्लिक भी कर दिया था because you had problems watching it. And इसमें जो मैंने essays करवाया उस वही आ गया पेपर में. Imagine this on your Just 1 day before the exam I did this. 2 days before, right? Yeah. Anyways, my point is just practice करना है. Lucky हो जाओगे तो करा हुआ भी आ जाएगा. जैसे हो गया. and AI tools. Yeah. Sounds
I think at the very end, right? We did of the lecture. Okay. Um. Anyways, so I'll end it here. मैंने अब तुम्हारे लिए एक शेड्यूल बना दिया है. ट्राई टू फाइंड 3 to 4 hours अगर ढूंढ सकते हो. जिनके पास कम टाइम है वो थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करो. जिनके पास 2 months है, I think 3 to 4, one, it's enough. Interview is one good method. पर एक क्वेश्चन नहीं पूछा. मैं बस ये कह रहा हूँ. मतलब ऐसे यही था. तो मैं यहाँ पे भी adventure sports should be banned to agree or disagree. That's the same question that they सर were. ये रहा. तो मैंने यही करवाया था. यस सर. So बस पैटर्न आप करो and you'll get it. मैंने पैटर्न नहीं कराया, मैंने पॉइंट्स नहीं कराया मगर. So maybe not that helpful. Okay. Anyways, do that. अगर डाउट्स होंगे मेरे से पूछो. स्टार्ट करो. फॉर्मेट्स नाउ यू नो. गो टू द वेबसाइट, डू द फॉर्मेट्स. वीडियोस भी हैं, उसके साथ नोट्स बनाओ. स्टार्ट राइटिंग, सेंड देम वन बाय वन टू मैम. जो मिस्टेक्स मैम निकाल रहे हैं वो अगले दिन मत करो. मैं नहीं ग्राफ्स लिख रहा हूँ, मेरे को भेजो. अगले दिन मत करो. Speaking practice with your speaking teacher. Prepare 1 or 2 on your own and फिर जाके teacher को बोलो randomly ask me anything and do it like that. And you can focus on specific things also like that. Reading and listening is mostly on your own and मैं करवाता ही हूँ क्लास में जो doubts होते हैं. सर वो Yes. मेरा मेंबरशिप और नहीं हुआ सर. वो मैं क्लास हाँ, नहीं सुन पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास. ये वाला तो फ्री है. मैं वो करता हूँ. Okay. Now उसका. Tapi number one. Okay. Um, Krishna B and somebody else also. मैं ना भी करता हूँ. Okay. I'll talk to Nuria. Are you here? Yes, sir. The account I made for you, can I share it with others? It has my information. So Yes, how I can share? no, I'll share it with others. Okay, I'm just saying, so three of you will share the account. Don't worry about it. You know the password and the this, right? Meaning I'm just wanting to say you don't use that account for anything personal. Just keep it No, for. I don't. Okay, yeah. So just telling. So I'll be sharing it so other people can also, you know. So I'll share it with you. You can all do it. I'm paying for that, so you can use it. अगर problem आ रहा है registration में तुम वो use कर सकते हो. So that's the plan. Nuria also had a problem because she's from another country. She's from so she could not access it. So same membership का थोड़ा issue है, वो मैं solve ऐसे ही कर सकता हूँ. Or I can't think of another solution. Okay, that's okay. Maria also, I'll help this. Maria also, the same solution I can think of. Yeah, sure, sir. Okay, Thank you. okay. बाकी मैंने try करा सोचने का, मुझे और कुछ नहीं मिल रहा. So I'll share it with you both. जो ये है. Okay. Okay. Okay, so I'll end it here. That's it. See you tomorrow. See you on my tomorrow is a holiday. Tomorrow there's a New Year event here. थैंक यू Celebration. सर. Thank you, sir. हैप्पी न्यू Ha- ईयर. हैप्पी न्यू ईयर सर. New Year. एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. Okay. See you on 2nd and have a good year. Have a good. I wish all of you clear your exams and you achieve your dreams this year. This year be the one. Thank you, sir. Happy New Year. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, sir. Happy New Happy Year. New Year. Happy New Year. Happy New Year to all. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. Okay. Bye. बाय सर.